Hi everyone, welcome back to Sports Khabri, Curious Harry and Arun Foot. Shine is busy with Indian football's, a key component of Indian football. East Bengal manager, former BFC manager, Carlos Quadra. So he won't be joining us today. It's just going to be the three of us. We're going to sort of preview the Qatar game. Of course, we still have a couple of days left for the match to take place. It's just nice to have a little chat, see what India could potentially do in this game, and any other sort of things that crop up we'll discuss today. Hiren, now it's sort of sunk in, I think, for everyone. I think I am at least off the high of the Kuwait win. It's sort of now looking ahead to Qatar. Have you sort of as well given the Kuwait game now a backseat and are now looking ahead for Qatar? Hello to everyone, first of all, and definitely now focus should be on the Qatar game. Kuwait game done and dusted, and जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिल चुका है. सो अब जो फोकस होना चाहिए वो कतार के सामने होना चाहिए, और कतार के सामने अगर हमने वो फिर से एक ऐसा कोई रिजल्ट या फिर ड्रॉ भी प्रोड्यूस किया, देन इट विल बी अ बिग बिग क्या बोलते हैं थिंग फॉर द इंडियन फुटबॉल. ना कि सिर्फ अभी के हिसाब से लेकिन फ्यूचर के हिसाब से भी. एंड अगर आप कतार वाले दोनों मैच, हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे थोड़ी सी. जिस तरह से हमने पिछले दो एनकाउंटर हुए हैं, लास्ट आई थिंक 2021 में खेला था, उसमें 1-0 से हम हारे थे. मुंबई फुटबॉल एरिना में वो मैच था मेरे हिसाब से. बिना एंड उसके पहले जो 2019 वाला वो फेमस 0-0 ड्रॉ वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी आई थिंक बात करेंगे. एंड उससे पहले मैं देख रहा था कि 1996 या 7 में हमने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच ही कतार के सामने खेला था, और शायद वहां पे 6-0 से हम हारे थे. सो कतार के साथ हमारा वो एक रहा है पिछले अगर 2-3 साल में देखे तो जिस तरह से. और एक एक चीज मैंने नोटिस की कि गल्फ कंट्रीज के साथ सिवाय की सऊदी, आई थिंक बाकी टीमों के साथ हमने कभी मतलब सडनली अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है, कभी थोड़ा सा क्या बोलते कि एक थ्रेसिंग भी हुई है. सो एक एक फिजिकल बैटल वहां पे देखने को मिलती है. तो कतार जिस तरह से अभी क्या बोलते हैं अफगानिस्तान को हरा के आ रही है, नो डाउट भले ही अफगानिस्तान की बीसी टीम थी, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा. लेकिन जिस तरह से इंडियन टीम को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक कुवैत के सामने जो अवे में विन किया है, उससे जो कॉन्फिडेंस मिला है, आई थिंक वो काफी ज्यादा मैटर करेगा. तो रियली रियली एक्साइटेड. एंड आई थिंक क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कल खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक फोकस फिर आई थिंक इंडियन फुटबॉल के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाएगा सभी लोगों का. सो Correct. लेट होप सो कि कतार वाला मैच भी एक जबरदस्त मुकाबला में देखने को मिलेगा. Yeah, thanks everybody. Hello everyone. Good evening to everyone in the chat again. And a couple of people are mentioning that Hiren, you've hit 8K subscribers. A lot of people congratulating you in the थैंक यू, chat. थैंक यू. So yeah, congrats on that. And no, of course, a lot of our conversation could potentially revolve around this, the starting midfield, and a couple of other changes. We'll discuss it. People are already making their feelings heard. And do you see the same midfield starting? Yeah, again, it's Qatar. I think in general we have to say what changes Igor Stimac could bring to the Mm-hmm. starting 11. I think that is going to be the interesting question. Is that he at the moment will be thinking, will be pondering about what to do, what not to do. Do I keep the same starting 11? Do I make a change? Do I make more than one change? And the midfield is one of them. I said that yesterday as well. I agree with Ankur that I feel that a combination of Suresh, Thapa, and Apuya could be an interesting one, which is a little bit of a more defensive approach than having Sahal in the team, in putting an Anirudh Thapa in. But in that way, I think we strengthen our midfield, and then in that way, we strengthen our defensive setup. In that way, we strengthen our whole setup in regard to sort of trying to block the Qataris. And I think that's going to be the first task of the day. And I Mm-hmm. again go back to my thought pre-match against Kuwait is look at the game in quarters, and in that way, survive 15 minutes, then play 30 minutes, then play 45 minutes. And then in the second half, change your strategy, potentially getting a little bit more attacking, a little bit more offensive, and then trying to get a result. Yeah, yeah. Lordbeck is pointing out something very important. Hiren, important for us to put pressure on them in the early on so that it sort of unsettles them. If we let them take control and dictate terms, it could be sort of one way traffic.
So do you see India possibly going at them for the first 10-15 minutes at least? डेफिनेटली, और ये जनरली हमने इंडिया के साथ ये स्ट्रेटेजी देखा भी है कि जो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट होते हैं, उसमें हमारा प्रेसिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है, सारी चीज़ें आई थिंक वो देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली अगर हम स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में वो उनको प्रेशर में रखेंगे, तो डेफिनेटली अगर कहीं पे उनके प्लेयरों से गलती हुई, तो हमारा चांस बन सकता है। एंड आई थिंक कुवैत वाले गेम में भी आई थिंक एग्ज़ैक्टली मेरे को मतलब याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में एक आध चांस हमारा ऐसा बना था कि जहाँ पे वी कुड पोटेंशियली स्कोर द गोल। Mhm. सो डेफिनिटली एक एक तो क्राउड का सपोर्ट ज़बरदस्त होगा, उसके अलावा अगर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में वो आई थिंक प्रेस अप किया तो डेफिनिटली कर सकते हैं। और अभी मैं एक एक स्कोर देख रहा था जो हमने 0-0 ड्रॉ किया था अगेंस्ट Mm. क्या बोलते हैं कतार इन 2019। तो उसमें अगर आप हमारी स्टार्टिंग 11 देखें, तो मनवीर सिंह एज़ ए नंबर 9 स्टार्ट किए हुए थे उस मैच में। उसके अलावा बिपिन सिंह थे, निखिल पुजारी भी थे उस मैच में, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर सहल अब्दुल समद थे, थापा थे, रोलिन बोर्जिस थे, बैकलाइन थी हमारी मंदार राव देसाई, संदेश जिंगान, राहुल बेके एंड आदिल खान एंड गुरप्रीत सिंह संधू। तो बिना सुनील छेत्री सर के वो हमने 0-0 का ड्रॉ निकाला था। एंड अगर हम 2021 वाला अगर आप देखें 1-0 जो हमने लॉस किया था, वहाँ पे हमारी स्टार्टिंग 11 थी सुनील छेत्री, बिपिन सिंह, मनवीर सिंह, मिडफील्ड थी हमारी सूर्य सिंह वांगजाम, ग्लान मार्टिन्स, आसिफ कुरुनियान थे उसमें प्रीतम कोटाल, सुभाशिष बोस, चिंगान एंड बेके। सो आप देखिए मोस्ट ऑफ द प्लेयर अगर आप अपने पिछले पिछले 2 बार जब भिड़े हैं उनसे, सो अभी जो करंट स्क्वाड है उसमें से काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको एक्सपीरियंस है उनके सामने खेलने का, 2 बार उनको पिछले 3-4 सालों में खेल चुके हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ कि टैक्टिकली हमको पता है कि कौन-सी क्वालिटी के उनके पास प्लेयर है। ऐसा नहीं है कि आपको सडनली मतलब एक क्या बोलते हैं कि शॉक या फिर सरप्राइज़ मिलेगा। सो वो एक हमारे लिए बढ़िया चीज़ होने वाली है। और हमने देखा है कि हमारे प्लेयर जब होम पे खेलते हैं, तो और ज़्यादा कंफर्टेबल खेलते हैं। पर्टिकुलरली अगर आप उनका अवे में जिस तरह से और कुवैत के सामने जो मेरे को वन ऑफ द रीज़न भी लगता है कि हमारे प्लेयरों की ओर से अच्छा परफॉर्मेंस निकला, उसका एक था कि एटमॉस्फियर जिस तरह का था कि वहाँ पे मतलब लग ही नहीं रहा था कि भई आप अवे में खेल रहे हो। द Fair, yeah. फीलिंग वाज़ लाइक कि आप होम पे खेल रहे हो, जिस तरह से क्राउड का सपोर्ट था, सारी चीज़ें थी। तो वो भी एक एक प्लेयर के माइंडसेट में मतलब होता है। सो आई थिंक यहाँ पे होम में कतार के सामने ऐसा नहीं है कि चांसेस है, अगर हमने हमारे पोटेंशियल पे खेला, देन डेफिनिटली एनीथिंग कैन हैपन। सो लेट्स सी। Fair enough. Arnava, again, another question on the midfield. It's the same midfield that you'd want to see, but in terms of roles assigned, I think you want to see Apuya a little further forward, if I'm not wrong, right? Or would you agree with this setup? No. I would use Suresh and Apuya as my defensive midfielders and Okay, Thapa as my sort of, yeah, you attacking can midfielder. mention him as an attacking midfielder, but his job is firstly actually to attack the Qatari sort of defensive midfield and potentially even the attack line and supporting Sunil in that. And it depends if you are in that position again, but you've not done it so much. Otherwise, I would have said Apuya and Suresh or Anirudh Thapa could actually interswitch positions. Hmm. That one of the three goes forward, the other two stay back, something of that. But again, I don't know how much time they have, how much they've practiced, but it will be interesting to see if that's really a potential thought process for the coach or not. Yeah, will be interesting. Another change, Hiren, this is likely for you. Changte for Manveer. देखिए, मैं टेम्प्टेड तो हूँ टू बी ऑनेस्ट चांगते को खिलाने के लिए, लेकिन मनवीर ने भी टू बी ऑनेस्ट मतलब आप देखिए कतारीज आर आल्सो वेरी फिजिकल साइड एंड गल्फ कंट्रीज के हमने देखा है कि देयर प्लेयर आर जनरली मोर फिजिकल और हाइट और वो सारी चीजें उनके पास होती है। सो और कोच ने भी जो कल क्लेरिफिकेशन दिया कि क्यों उन्होंने मनवीर को सिलेक्ट किया ना, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ऑफेंसिव थ्रेट के लिए हमने मनवीर को साइन किया है। उन्होंने बोला कि हमको सेट पीसेस एंड कॉर्नर में भी अच्छी तरीके से डिफेंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक ऐसा प्ले डालने से कि जो मतलब एरियल ड्यूल्स आपके जो है इन कॉर्नर और सेट पीस सिचुएशन की जहाँ पे वो विन कर सके, इसलिए उनको डाला गया था। तो एक डिफेंसिव भी एक क्या बोलते हैं कि कोच का वहाँ पे एक एक फैक्टर उन्होंने कंसिडर किया था। सो अगर कतार के सामने भी वो सेम थॉट प्रोसेस के साथ जाते हैं देन डेफिनेटली मनवीर विल स्टार्ट। अदरवाइज अगर आप ऑफेंसिव ओनली थॉट के साथ जाते हैं देन आई वुड गो विथ क्या बोलते हैं कि चांगते। Yeah, I mean, there's no conversation about Brandon, right? Even if he's fit, because um,
Sahal would make the team if we wanted an attacking midfielder over Brandon, right, Arnava? Yeah, I think Brandon has been pushed down a little bit the pecking order. So in that way, Sahal is way ahead of him, and or even the others. I mean, listen, Colasso at the moment is not being discussed as a potential starter. Subhashish Bose is not being discussed as a potential starter, to mention some of the players who are in the squad but not in the starting lineup. And it's a question, how do you play your wings? I think Chante showed after he came on that he can add something to our game with his pace, with his class, with the way he can put the ball into the box, which very few Indian players can. And that's the question. Do you keep Manveer on one side? And do you potentially bring in Chante to replace Mahesh, who had a weaker game that night? So that is something that potentially, if you're looking at two changes at the moment, that we potentially could discuss. But again, let's have discussion on Monday. Maybe I have a hunch on what Mr. Steemach might do on Tuesday, as I did the other night but before the Kuwait game. बट आई वांट टू नो कि जो मतलब मैंने जैसे बोला कि अगर पिछला 2 मुकाबला भी हमने जो खेला है कतार के सामने, उसमें से ये जो अभी करंट स्क्वाड है उसमें से काफी सारे प्लेयर खेला है, तो व्हाट आर दी चेंजेस मतलब आपको लगता है कि इन प्लेयरों में हुआ है इन दिस 2 और 3 इयर्स, जो उन्होंने पहली बार जब कतार के सामने खेला था और अब? See, there are 2-3 things where it's again I always say let's take a reality check. Okay, we have played 2 matches, conceded 1 goal against an opponent, and I was there in Doha, right? In Doha, when we drew goalless. Qatar is one of those sides who, on their day in Asia, can beat anybody. Right? They have that quality. Now, our team, our players, a lot of them have improved. On the other side, I have to say the Qataris have also improved, have brought in a few younger ones as well. They've also played a World Cup, a proper World Cup, 12 months ago. Let's not forget that. And they have a very, very experienced tactician in Carlos Queiroz, who, in his last role as Iran head coach, has played against India. Right? So, have we improved? Yes. Do we, again, this approach of can we go and attack Qatar? Might sound nice because we're thinking of a potential Mumbai City strategy against Al Hilal. Do we have that capabilities? I think we are better as a counter-attacking side. We scored the goal from a counter-attack. So therefore, we have to play to our strengths. If we are talking about possession football, domination, all those things, this is something which our team can't do. Let's focus on what our team can do. Let's be realistic what our team can do. Yeah. And that's, not think, our team is Barcelona or Real Madrid or whatever. We are a very, very good counter-attacking unit. We have to get those spaces, those gaps. And that only happens if you allow your opponent a little bit of more space. And that's, I think, also the learning from what Mumbai City did against Al Hilal. In the first one, they went all out, conceded 6. In the second one, they even played with a 5-man backline, much more defensive setup. Was actually good on the counter. Lost 2-0 with a little over of luck. Pereira Diaz could have scored a goal. So this is something that, that Igor Steemach with his coaching staff will consider, will think about. The advantage is what I said yesterday. We have 3 points in our books. We are not that much on the pressure. If anything we get against Qatar at this stage is a bonus. नहीं, आई थिंक कंप्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस टेक्टिकल पार्ट कि भाई एक जिस तरह से आई थिंक कुवैत के सामने भी हमने टेक्टिकली जिस तरह से मैनेज किया था कि प्लेयर भी अगर मान लीजिए कि जैसे हमने बोला कि अगर गेम प्ले वाइज देखे तो वी आर नॉट अप टू दी मार्क थ्रू आउट दी कुवैत गेम, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने बेहतरीन फुटबॉल खेली, लेकिन टेक्टिकली वी आर वेरी मतलब क्लियर कि प्लेयर को कौन सा रोल दिया गया है और उसी के चलते हमने गोल भी स्कोर किया. तो डेफिनेटली कतार के सामने भी वही अप्रोच रखना चाहिए रादर देन प्लेइंग गुड फुटबॉल. आई थिंक द जो मैटर करता है वो वही है कि अगर आपने 3 पॉइंट या 1 पॉइंट लिया देन दैट वुड बी अ
you can say कि great moment for us. So I think rather than thinking about gameplay, I think focus करना चाहिए कि भाई कैसे भी करके हमें उनको यहाँ पे रोकना है. And I think completely agree on that कि भाई attacking football अगर खेलने जाएंगे then definitely we will concede more. चाहे भले ही हमारी बैकलाइन राहुल बेके ने अच्छा खेला हो, संदेश जिंगान ने अच्छा खेला हो, मिडफील्ड ने अच्छा खेला हो, यू विल ओपन अप क्योंकि उनके पास जिस तरह के विंगर्स है एंड आपने जैसे बोला यंगस्टर को डाला है, दे आर वेरी क्विक एंड आपके आपके प्लेयर डिफेंड नहीं कर पाएंगे. सो यू हैव टू बी रियली कॉम्पैक्ट ऑन दैट डिफेंसिव लाइन अगर आपको कतार को यहाँ पे कुछ देर के लिए भी रोकना है या फिर अंडर प्रेशर लाना है. एंड अगर जितना टाइम आप उनको रोकेंगे, जैसे आई थिंक मुंबई सिटी ने भी किया कि अगर फर्स्ट हाफ में मान लीजिए कि आपने गोल कंसीड नहीं किया एंड उसके बाद सेकंड हाफ में उनके ऊपर भी प्रेशर बनता जाएगा एंड उसमें आपने अगर कई गोल कर दिया देन टोटली डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा. फिर उनके उनके माइंड में भी एक चलने लगेगा. सो आई थिंक मेरे हिसाब से भी जो अप्रोच रहना चाहिए वो वही रहना चाहिए कि काउंटर अटैक एंड थोड़ा सा मिड ब्लॉक खेलेंगे देन डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं कि वो जो थ्रेसिंग होने से या फिर एक उनको भी प्रेशर में ला सकते हैं. ऊपर से क्राउड का सपोर्ट भी होगा, सारी चीजें होंगी. सो आई थिंक कुछ फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. I don't know about this is sort of the best compliment for a midfielder coming in, isn't it? That somebody you've been talking about for so long, suddenly nobody's talking about him. Jeekson Singh, everybody was talking about him before the game started. Now nobody's talking about Jeekson because the midfielders did a great job. And do you feel like his absence wasn't felt at all? No, it wasn't because our best current midfielder was playing, and that's Apuya, simply said. And I think it would be an interesting combination if we could have actually Jackson, Suresh, Apuya playing. You know, Yeah. that would be most probably our best midfield trio at the moment. And yeah, it's if you're not missed in a defensive way, that's good. But Jackson is a quality player that could add something to our team and would allow most probably Apuya to go in a more attacking role as well. And that would help us most probably. So in that way, in the position that he was and is or plays, Jackson was not missed. But if he plays, I think we could be even a little bit more better and stronger. I saw a comment. हाँ बोले बोले राहुल. Sorry. I saw a comment somewhere. I think it was from Lord Baker, and he's asking if even I was thinking this in my head. If Changte doesn't come in for Manveer, and if the coach wants to go with Manveer for another game for whatever reason, is there a shout for Changte to replace Mahesh on the left side? आई थिंक मे बी बन सकता है बिकॉज जिस तरह का इम्पैक्ट उन्होंने डाला है आते ही जिस तरह की उनकी पेस है मे बी. बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब क्या बोलते हैं कि फ्रंट लाइन में चेंज होता हुआ दिखेगा मोस्ट प्रोबेबली. मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या बैक लाइन में मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपको डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग जाना है देन भले ही राहुल बेके और संदेश जिंगान ने कुवैत के सामने अच्छा किया लेकिन कुवैत एंड कतार इज ए टोटली क्या बोलते हैं कि डिफरेंट बॉल गेम. सो आप दोनों से मैं जानना चाहता हूँ कि वुड यू प्रिफर टू ऐड वन सेंटर बैक और यू कैन से कि डिफेंसिव फुल बैक लाइक सुभाशिष बोस इन द लेफ्ट साइड और मे बी राहुल बेके को आप राइट में शिफ्ट करके मेहताब को डालो. तो एक आपका जो डिफेंसिवली है वो और भी ज्यादा एक क्या बोलते कि आप बोल सकते हैं कि नहीं भाई एक स्ट्रॉन्ग बैकलाइन के साथ आप उतरे हो. सो व्हाट डू यू प्रिफर अर्नव सर विद द चेंज इन द बैकलाइन और जो कुवैत के सामने थी वही बैकलाइन के साथ आप जाना चाहेंगे? I would go with the same formation, and I would potentially, as I said, look at two changes. Sal and नहीं Mahesh potentially out. सॉरी सर नहीं फॉर्मेशन बैक फोर ही रखिए लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सेंटर बैक में चेंज नहीं करना है देन कैन यू ऐड डिफेंसिव क्या बोलते हैं फुल बैक? I would not. ओके. I would, again, as I said, I would strengthen my midfield. I would take out Sahal, put in Anirudh Thapa, and most probably Changte for Mahesh. Okay. I would not try and add, again, try and put, let's say I take Sahal out and I put Mehtab Singh in and try and play a three-man backline. I don't know if that's the need of the hour, or if I could theoretically even take out Nikhil Pujari and make Manveer Singh and sort of a more defensive right wing back. I wouldn't tinker too much with the formation because I think whenever Stimac has tried to play a three-man backline,
it has not worked for him really. नहीं, वो तो हुआ ही है। विनीत लाकड़ा भाई, हम कतार की प्लेइंग 11 भी जो जब मंडे को प्रीव्यू करेंगे तब वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तो हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं ओवरऑल, मतलब क्या बोलते हैं कि व्हाट आर दी, मतलब इंडिया के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं और किस तरह से हमारा पास्ट में उनके साथ रिकॉर्ड रहा है, वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली मंडे को प्रॉपर रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। वहाँ पे इंडिया की, उनकी, कतार की कौन कौन से प्लेयर उनके हैं जो डेंजरस हो सकते हैं, सारी चीजें हम उस प्रीव्यू में डिस्कस करेंगे। Actually, Hiren, I'm seeing a couple, even Gazab saying Subhashish over Akash. Not for me as well. I wouldn't want to see this change because I think Akash also gives you that extra bit on the counter, lot of pace, काउंटर, हाँ। and नहीं, नहीं, फिर that's अगर where आप मतलब, नहीं, नहीं राहुल, अगर आप डिफेंसिव वो डालेंगे फुल बैक या फिर, तो फिर आपको Hmm. क्या बोलते हैं कि आपका जो ऑफेंसिव पार्ट है उससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। फिर True, true, मतलब true. जो जिस तरह से कुवैत वाले मैच में निखिल पुजारी का रोल था ऑफेंसिव, जिस तरह से वो मनवीर सिंह के साथ आप देखिए लिंकअप कर रहा था, या फिर आकाश मिश्रा का उस गोल में रोल था, जो गोल यहाँ पे काउंटर पे हुआ है, वो सारी चीजें, तो वो फिर तो आप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो क्वालिटी आप सुबह से स्पोर्ट्स से और उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नो डाउट दे आर ऑल्सो गुड प्लेयर, बट स्टिल तो डेफिनेटली। I think a lot more people, again, more and more people are now saying Thapa over Sahal for this game, which seems pretty reasonable, to be fair. And again, another Amal saying, बट uh, मेरे को लग रहा है कि आई डोंट थिंक सो कि क्या बोलते हैं कि ईगो स्टिमिक विल चेंज दैट। आई थिंक ही विल स्टार्ट विथ सहल। seems like his. Yeah, हाँ, even I agree. I think I don't know, but don't you think Sahal one of his favorites? Seems like it. He has favorites in certain patches, you know, एग्जैक्टली, and हाँ। and and that has changed from time to time, and which is टाइम टू fine with the टाइम coach. I think it's कोच, fine Yeah. with the हाँ। coach to say, you know, at this moment, at this stage, player X is my favorite, and then let's say 3 months, 6 months later, this one is my favorite, and that's फेवरेट। natural, that's normal. This Therefore, is again, um, you is know, Sahal's Nikhil favorite right now. Nikhil 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 Pujari was his favorite a time a while back, but more in an attacking right winger position. Nikhil Pujari now is his favorite as the right back, right? And there was someone else in between. So therefore, changes will be there. So let's see. हाँ, Yeah, but नंदन नंदन दत्ता राहुल पूछ रहे हैं कि विल इंडिया कीप। आई डोंट yeah, थिंक सो कि no, हाईलाइन के I साथ don't हम खेलेंगे, टू बी probably ऑनेस्ट। आई no. थिंक अगर हाईलाइट खेले देन इट विल बी हाई स्कोरिंग गेम। इंडिया भी भले ही एक दो मारेगी, लेकिन सामने कतार ज्यादा मार देगी। इश्यू वो होगा, अगर आप हाईलाइन के साथ खेलने जाओगे तो आपकी बैकलाइन चाहे भले ही कैसा भी परफॉर्मेंस करके आ रही हो We कुवैत don't के सामने। have we don't हाँ, have the back line for a high line. This Yeah, is we don't. it's हाँ, also not fast. It's also not quick. हाँ, And so therefore, high line makes no sense. Again, सेंस, we are हाँ। trying to copy things which are done by top teams around the world. We are not at that level. I think we need to stick to the basics, do the basics right. Even doing the basics right sometimes is tough. So let's be realistic with what we're expecting from this team. Yeah, Alex, 100% Apuya will be starting after that performance at least. If he doesn't, there's something seriously wrong. But yeah, नहीं, he नहीं, has नहीं to. होगा। अब इतना भी हम वो नहीं करेंगे। अब Yeah, आई थिंक ईगो स्टिमिक क्या बोलते हैं कि जब उन्होंने हेल्पिंग हैंड आगे फॉरवर्ड किया है, सो लेट्स ट्रस्ट ऑन दैट एंड डेफिनेटली अपुया विल स्टार्ट। Apuya starting for sure, at least. India has got to play their best for to probably be the best game against Qatar. Even Bolton is what Vineet is saying. Do you guys think our best case scenario is a draw and not a win? Are we capable of getting a win against Qatar? See, in football, anything is possible. So you have to play, as I always like to say, to play the 90 minutes. So any Mhm. result is possible. But if we go by, even by current form, if we go by pedigree, a draw already for us is an upset. Let's be honest. It's if we look at the results across the world over the last few days, the only real big upset was Nigeria being held by Lesotho to a goalless draw, right? Uruguay beating Brazil or Colombia beating Argentina might sound as an upset for people who follow football on and off, but in the South American context, these are teams who can beat those teams. So I don't call them an upset. So अपसेट therefore, if India are able to draw Qatar, it's a huge result for us. Huge result for us.
Yeah. दीप शिखर सिंह भाई चुंगनुंगना का तो मुश्किल है भाई कतार के सामने स्टार्ट करना। आई थिंक इट्स अगर होगा भी तो मेहताब कुछ अगर आप बोलेंगे कि चेंज भी वो अगर कर रहे हैं देन मेहताब वुड बी द फर्स्ट चॉइस रादर देन चुंगनुंगना। सो इट्स डिफिकल्ट। कोई बोल रहा था कि 75 मिनट के बाद आप डिफेंस को चेंज कीजिए। आई डोंट थिंक सो कि अगर डिफेंस अच्छा कर रहा होगा तो आई थिंक पर्टिकुलरली सेंटर बैक में तो आई डोंट सी कि भाई वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे। आई थिंक ही विल कंटिन्यू विद दैट क्या बोलते हैं सेंटर बैक पेयर। Yeah, Ankur, we've said this multiple times. I think in these sort of games, it doesn't matter how you play. We completely हाँ agree with you. Just get the points and just walk out. Yeah, just get the points, get out of there, and the job should be done. Home एक चीज मैं यहाँ advantage. पे हाँ होम एडवांटेज की बात आई है उसी के Yeah. चलते मैं एक बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट प्रमोशन कर रही है दैट्स अ कमेंडेबल जॉब। आई थिंक जिस तरह से टीम को रिसीव किया गया जिस तरह से वो टीम बस देख के मेरे को मतलब अच्छा लगा काफी मतलब हम जनरली देखते हैं क्रिकेट की टीम के लिए सारी चीजें होती है फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट की ओर से या फिर जहाँ पे भी इंडिया में होता है लेकिन आई थिंक बाकी गवर्नमेंट्स को या फिर जो भी है स्टेट अफेयर्स उनको सीखना चाहिए जिस तरह से ओडिशा गवर्नमेंट सपोर्ट दिखा रही है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी जिस तरह से उनका मतलब मेरे को एएफएफ से ज्यादा तो वो इस मैच को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप स्पोर्ट ओडिशा का पेज देखेंगे उनका सारा वो वीडियोस देखेंगे सारी चीजें देखेंगे तो आपको लगेगा कि यही लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं मैच को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। होर्डिंग्स सारे लगाए सारी चीजें की है तो दैट्स अ गुड साइन। व्हाट डू यू से नाउ सर? Yes, but again, don't sound like as if I go back in history. These are things that have been happening for many, many years, which should be normal. You know, that it's being highlighted is a problem. This should not be anything special. And these should be normal things. They've been done. I've seen that 20 years ago that certain things again in the pre-social media age, a lot of things used to happen. And then for some other reasons here or there, they were stopped. Or even in Bangalore, when India used to regularly play in Bangalore, um, the AFF and the Karnataka State Association and the Bangalore District Football Association used to do a lot of promotion. So, you know, and for Odisha is a little special in this, right? They have, you know, if you look at the way they've promoted hockey, they've been promoting our football for a few years, men's and women's. This body sports Odisha is most probably the most proactive body in itself in the way that it does its work, right? So there are people involved in this body who are there for the love of sports, for the promotion of sports, and they do that, and that's great to see. So therefore, they're doing a good job. But I also like to say one thing. My personal experience has been over the last two plus decades also that we sometimes have had better support abroad than we've had in India, India. especially the Middle East, be it in Qatar, be it in the UAE, be it now what I saw the other day in Kuwait, be it in the UK when India used to come in 2000, 2001, 2002. You know, one of the best matches I have ever seen in regard to support was against West Bromwich Albion, you know, in Birmingham in 2000, where India played a goalless draw. So therefore, you know, it's this should be the way, you know, it is, and again it's growing fan culture that we're seeing across India, which is good. But we see sometimes that for Indians abroad, if we are able to challenge a team which we are facing, especially in the Arabian world, there is a little bit of extra pride involved. And that is what comes out. If it is in Abu Dhabi, if it's in Dubai, if it's in Doha, if it's Kuwait City, that you saw the other night in Kuwait City. You know, and I think that energy that also Igor Stimac was talking about, I think that's sometimes very, very special and very, very needed. Yeah. Guys, a lone goat is saying that the Qatar captain said this at a conference. If he did, India has become a stubborn team. They've improved a lot in the past years. Defeating them at home isn't easy for us. For a captain to come out and say that, is it expected or is it good that sort of they are It's taking blah things blah. serious? It's Yeah. blah blah. It's for Okay. me. It's again, if we interpret all of those things that the coaches and the players say, I think 90% of the stuff that players and coaches say could be used against them after a game, Game. because in a lot of times it doesn't work, right? So Mm. what else is he going to say? No, India is bad. We're going to hit them for a 5 or a 6. You're not going to say that. You wouldn't have said it also ahead of the Afghanistan game. You know? So showing respect. This is the basic part. Showing respect to your opponent, and then play the football in the 90 minutes.
That we have improved, no doubt about it. We are better than we were. Are the Qataris better than they were? I would feel so as well. And don't forget, they're the defending Asian champions. India drawing them in 2019, was I think it was the only game they drew that year. I think all the other matches, if I'm not wrong, they won in 2019, including all the matches in the Asian Cup. So therefore, yeah, it's quality team, it's a quality opponent, and we'll have to prove ourselves. Let's see what we can do. मेरे को वो मोमेंट याद आ जाता है जब उन्होंने जापान के सामने वो फाइनल में गोल किया था, मतलब जबरदस्त. Guys, of course, again, it's sort of been again very nice chat. Of course, we're going to preview the game thoroughly once we get closer. कुछ VAR कमेंट back. नहीं एक आध दो कमेंट. ऑस्ट्रेलिया 1-0 कतर अंडर 23 फ्रेंडली गोइंग ऑन. ओके भाई. Okay. Vinny saying Gurpreet Singh Sandhu was the one who helped India draw that game against Qatar. Yeah. 21st को भी जरूरत पड़ेगी. There were two things. You're right. Gurpreet had an exceptional game. Plus the Qataris finishing was very, very awful that day. Luckily for us. 27 to 2 शॉट्स थे उस मैच में. 27 शॉट्स उन्होंने लिए थे, हमने सिर्फ 2 शॉट्स लिए थे. और 15 कॉर्नर कतार ने लिए थे और 1 कॉर्नर हमने लिया था. सो दैट शोज उस मैच का, मतलब वो क्या बोलते, उनके साथ दिन ही नहीं था कि वो मैच में वो गोल करने वाले थे. अदरवाइज but Udanta could have scored towards the end. That is the charm of football, na? Football, exactly. What I think it was the statistics also from Churchill Brothers Interkashi yesterday. I think Churchill had 12 chances, 1 goal. Interkashi had 2 chances, 2 goals. 2 goals. That is football. That is, and that is the charm of the game. It is not chess. It's not predictable. So we have our chances. We have to play 90 minutes. But if we are going by the facts, Qatar is the favorite to win this game. That's the reality. Yeah. I think Adi's referring to the last game. Sahal and Mahesh were tightly marked. That's why they couldn't perform. But I think these are things that will happen. When you play against a better side, the defender will be that much tighter. I think it's up to the players then to sort of find their way and wriggle their way out of these problems. You will get that when you play a slightly better opponent, and these things are normal. और पर्टिकुलरली जब कार्लोस कोरेज जैसे कोच हो, देन डेफिनेटली टैक्टिकली वो भी मतलब प्रिपेयर करके आएंगे कि हाउ टू ब्रेक दिस डिफेंसिव लाइन, और किस तरह से यहाँ पे जो इंडिया की ऑफेंसिव लाइन है उसको किस तरह से हमें कंट्रोल में करना है या फिर रोकना है. तो डेफिनेटली वो तो चैलेंज देखिए हमारे प्लेयरों को लेना ही पड़ेगा. जब आप जैसे इंप्रूव होते जाएंगे, इट्स गोइंग टू बी चैलेंज, क्या बोलते कि और ज्यादा मुश्किल होता जाएगा. तो फिर वहां पे वो चीज नहीं आनी चाहिए कि भाई उन्होंने हमको बेटर मार्क किया. दैट इज द आपके लिए वो दिक्कत है कि आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है. Yeah, and also, do you guys see this sort of working for the long term? These, if Apuya, Jeeks, and Suresh eventually happens and works out, is that India's midfield for a good 5-6 years? Can we say that? यस, नहीं यस शर्मा भाई, आई थिंक कल भी हमने इसका रिगार्डिंग राहुल बात की थी कि हमने देखा है कि जनरली एक आइडियल 11 की बात होती है. उसके लिए सही है कि भाई क्या इंडिया की ये जो अभी है उसमें डिस्कस करें तो उसमें हो सकता है. क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो इंजरी आपको 2 महीने में बाद आप अगर खेलेंगे एशियन कप, तो इसमें से अभी भी चांसेस है कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो और वो एशियन कप में नहीं जाएगा. सिंपल सी बात वो है. दूसरी चीज ये है कि आप अकॉर्डिंग टू दी ओपोनेंट भी जाएंगे. आप ऐसा फिक्स नहीं करके जाएंगे कि भाई मेरे को यही मिडफील्ड खिलानी है, चाहे सामने कोई सा भी ओपोनेंट आ जाएगा. तो वो फिर आपका क्या बोलती कि वो हो जाएगा. सो ये एक आइडियल डिस्कशन, या फिर एक जो उस जनरेशन की यहाँ पे 2-3 साल की अगर आप बात करेंगे कि भाई हमें मिडफील्ड में यहाँ पे स्टार्टिंग 11 या फिर एक 11 बनानी है इंडिया की, फिर उसमें आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इन 3 के साथ जा सकते हो. लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेयर अवेलेबिलिटी, आई थिंक आगे बढ़ना पड़ेगा तभी जाके. और ये हमारे लिए अच्छी बात है. देखो कि सुरेश वांगजाम, जिक्सन, अपुया, थापा, सहल और उसके अलावा 1-2 प्लेयर और अभी ग्रो हो रहे हैं. सो आपके पास मिडफील्ड में वैरायटी ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं. तो दैट्स अ गुड साइन कि आपको जिस तरह की फुटबॉल आप खेलना चाहते हो फिर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो वो वाली चीज है. तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि भाई 3 साल के लिए अभी हमारी मिडफील्ड यही रहेगी, सुरेश, अपुया और जिक्सन.
Yeah, Amal's also saying that there are, of course, potentially youngsters coming in is always going to be a threat to anybody who starts. If they're doing well and they're doing better, then why not have them in the team as well? Um, India have to press. Another same message from a few more people. As in the first 10 minutes, do you see that happening? No, Okay. I don't. Again, this it doesn't work for us because if we're playing a high line to press Qatar, you'll have a gap between the first line, let's say the first, which is Sunil and whoever the wingers are, potentially the guy who's in the number 10 position, and then the defensive midfield. You'll have a gap and you can, overplay them and it doesn't make sense. We have to play smart football. We have to play clever football. And that is something, which I feel is the most important thing. Early predictions from I think Unique saying will win Tudor. Um, a little bit of I just want to pick this up. Manveer never gets enough credit for what he does on the field. Many times when it comes to Manveer and Rahim, people criticize a lot, but I never give up on these guys. Is what Igor Stimac has said. And do they get enough credit for what they do for the shift they put in? देख आई थिंक इसको दो तरीके से आप देख सकते हो कि कौन से क्रिटिसाइज मतलब जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको कितना ज्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हो। देखिए फैन का तो ये चलता रहेगा, फैन जब जो कोई अच्छा कर रहा है, जो गोल स्कोर कर रहा है उसकी तारीफ आपने कल के मैच में देखा कि भाई जिन्होंने गोल मनवीर ने जैसे गोल किया कुवैत के सामने तो उसकी तारीफ भी होगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई बाकी प्लेयर की भी हमें वो करना है। तो फैन का देखिए वो शिफ्ट होता रहेगा और उसको आई डोंट थिंक सो कि इगो स्टिमिक को या फिर प्लेयर को भी उतना ज्यादा मतलब सीरियसली लेना चाहिए। मतलब फैन का परसेप्शन तो आपका चेंज होता रहेगा मैच बाय मैच, यहाँ पे जैसे ही आप परफॉर्म करते जाओगे। सो वो उसके ऊपर और एक देखिए कि हर कोई फैन मतलब क्या बोलते कि वो उतना ज्यादा वो भी नहीं होता कि भाई जिनको क्या बोलते कि पूरा टेक्टिकल गेम का समझ है। वो तो आप कोच को ही पता होगा कि भाई ट्रेनिंग सेशन में बंदा कैसा कर रहा है, सारी चीजें उसकी फिटनेस लेवल क्या है, क्या सारी चीजें, इसीलिए तो उनको अपॉइंट किया गया है। सो इन सारी चीजों से डेफिनेटली एक एक उन्होंने जो बोला है वो मतलब सही है कि भाई मनवीर को जनरली काफी ज्यादा और हम भी मतलब क्या बोलते हैं वॉचों के दौरान बोल रहे थे कि भाई हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट करो सब करो, लेकिन वो एज ए फैन हमारा वो रिएक्शन है एंड ही नोज बेटर फुटबॉल। तो डेफिनेटली लेट होप सो मनवीर रहीम अली आगे जाके और भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे। हम तो देखिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई मनवीर को हम हमारे हमारे साथ या फिर फैन का, मैं जनरली बोल रहा हूँ एज ए जनरल फैन कि भाई कोई पर्सनल दुश्मनी है। जो प्लेयर अच्छा करेगा फैन उनकी तारीफ करेगा, जो गोल नहीं मारेगा मैच हराएगा सारी चीजें होंगी तो फैन दूसरे दिन यहाँ पे क्या बोलते कि आपकी क्या बोलते क्रिटिसाइज करेगा, तो वो तो चलता रहेगा। Yeah, fair enough. Again, a lot of people are already giving their early predictions for India. I just to add to that Yeah, what Hiren said, and I've said it in the last 2 days. I think that line is very, very thin. इन If Manveer doesn't score and you play a 0-0 draw, you will be praised for Rahul Baker's performance, but questions will be raised about Manveer. मनवीर Why did you not play Chante? On the other side, if India had lost, you would also have raised a question of Rahul Baker. राहुल बेके And we see the difference. Look at the reactions in June, July. Look at the reactions in September, October. It's very simple. It's dependent on success. And some things will work, some things will not work. Players like Manveer put in a shift, yes. The same can be said about Rahim Ali. And Rahim Ali gets a lot of more stick than I think Manveer. Under Stephen Constantine, very often it was Suvin Pasi used to get the stick. So there are these kind of players, right? The point is that every player, whoever it is trying to do his or her best in India colors at senior or junior level. Not always will they be good enough. एग्जैक्टली If Igor Stimac had decided at halftime to substitute Manveer and bring on Changte, Liston, whoever, nobody would have said anything. Because after that first up, again, Manveer's best thing that he did was actually by far was the goal. गोल हाँ Otherwise, it was not the best of games, right? So that is something that we need to be honest about when we talk about it. And and the coach has to be honest about this as well, with himself, with the players.
internally rather than externally, I would say. Action. Yeah, yeah. It's going to be interesting to see if he does start Manveer in the next game, and if Manveer sort of doesn't have the best of games, it's going to be interesting to see how fans react. Then सर सर इसमें इसमें एक मैं रोना सर से जानना चाहता था कि क्या ये जो मैच होता है उसमें ऐसा होता है कि आप 23 मेंबर के साथ ही जा सकते हो, मतलब जो स्क्वाड होती है भले ही आपने 25 की सिलेक्ट की हो, लेकिन ऐसा रूल होता है कि 23 मेंबर स्क्वाड ही आप अनाउंसमेंट कर सकते हो, या फिर जो फाइनल आपकी स्टार्टिंग 11 प्लस सब्स वो कितना होता है, 22 23, उसका कोई फिक्स नंबर 12, होता है? 12 international football is 12 players on the bench. अच्छा, 11 प्लस It 12 used तो it used to be you could during COVID and they FIFA changed the rule. You could actually go 26 as you did last year in the World Cup, but your final squad match day squad has to be 23. That has been reduced. At least UEFA has already reduced it for the Euros next year to 23 players again. I think AFC and CAF will also do it for Asian Cup and for the African Cup of Nations. बिकॉज कुवैत के सामने हमें ईशान पंडिता का कोई रीजन नहीं आया। चलो ब्रेंडन का तो रीजन दिखाया गया कि भाई वो उनको बैक में प्रॉब्लम है, लेकिन ईशान पंडिता बेंच पे भी नहीं थे, तो मेरे को लगता है कि वो एक मतलब क्या बोलते हैं फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 25 आपने अनाउंसमेंट किए थे, उसमें से 2 प्लेयर आपके बेंच पे भी नहीं थे, तो माय वन ऑफ द माइट वो रीजन हो सकता है कि वो यहाँ पे बेंच पे भी नहीं थे। Could be that. Could be also some sort of niggle or injury, which these people did not speak about. yeah, yeah. Um, Do you want to sir, do you want to see Hassan Pandita get some minutes against Qatar? I don't know what the status of Ishan Pandita is in regard to fitness. So that would be my question. But he played some minutes against for the क्या बोलते हैं कि Kerala Blaster. Yeah, but he's not. Has he played a 90-minute game in the recent past? No. Not even close. Not even close to that. We should not forget that, right? So that's the question. Is he fit enough to play? If he's fit enough to play, then let the coach play him. If he's an option. If the coach doesn't think him as an option, he will play someone else. Yeah, yeah. It's going to be interesting again to see who he plays. But I don't think Ishan Pandit, because not only do you have to play 90, do that for a few games at least before you get into the team. एग्जैक्टली बट एक प्लेयर की हमने मतलब जो हम क्या बोलते हैं जब टीम सिलेक्ट हुई तब बात कर रहे थे रोशन सिंह की, उसका मतलब डिस्कशन में ये नहीं आ रहा है, मतलब बैलेंस वाइज अगर आप देखें तो इज आप इस तरह के मैच में आप उनको लेके जा सकते हो कतार वाले मैच में। सो आपको लग रहा है कि उनका भी दूर दूर तक कहीं चांस बन सकता है, नॉट एज अ फुल बैक बट आई थिंक थोड़ा सा अप फ्रंट भी वो खेल सकता है और एक डिफेंसिव सोलिडारिटी भी आपको वहां पे मिल सकती है। He can play on the wing really if they definitely need someone to give you some legs in the end of the match. But I don't see him playing 20 minutes, 30 minutes. Probably last 10 if they really need some legs and if someone's really tired. Otherwise, no, I don't think so. Yeah, it's looking tough. आई थिंक ये कतार वाले मैच में तो मैं देख रहा हूँ कि 5 सब्स्टिट्यूशन मतलब अर्ली होंगे कंपेयर टू अगर हमने कुवैत वाला गेम देखा कि जहाँ पे आपने मतलब लास्ट के 3 सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए और वो सारी चीज करने के लिए किए जो लास्ट के मैच में, लेकिन कतार के सामने मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो चेंजेस होंगे वो थोड़ा सा अर्ली होगा। आपको क्या लगता है सर? It's I think that Steamach will go with a strategy where he'll try and sit back and look at the defense, and as I said, try to hit on the counter. That is something that has worked for you against an Iraq, that has worked for you against Malaysia at the start. Kuwait, you took a wait and watch approach, and then got a little bit more adventurous in the second session. But Qatar most probably will hit you harder. So in that way, I fear that that defensive unit needs to be much, much stronger than it was against Kuwait.
In Kuwait, we played a very good game. We were strong, we were solid, but this is a stronger opponent which we'll have to play against. Yeah. Guys, again, something that we wanted to discuss in the VAR conversation has come up again. Um, what is the news on that? What is potentially VAR coming into Indian football? आई Yeah. थिंक हमारे जो सेक्रेटरी उन्होंने अभी तो मतलब सिर्फ वो क्या बोलते कि मीडिया रिपोर्ट से बात जब कर रहे थे मीडिया हाउस से, तब उन्होंने बोला है कि वी आर प्लानिंग रिगार्डिंग दैट। सो लेट्स वेट फॉर दी क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा उनकी ओर से और भी ज्यादा इसके ऊपर एलोबरेट किया जाएगा कि किस तरह से प्लान मूव अप करना है। और उन्होंने जो मतलब बोला है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी जब वीआर का डिस्कशन हुआ था कि इसके लिए आपको प्रॉपर जो फीफा का रूल्स रेगुलेशन है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जुगाड़ के साथ वो वीआर लगा सकते हो। आपको प्रॉपर आपके रेफरीज का ट्रेनिंग सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। और एक चीज जो उन्होंने बोली वो थी कोस्ट के रिगार्डिंग की भी, कोस्ट इसका कहाँ से हम करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे इसके रिगार्डिंग। सो आई थिंक जो उन्होंने 25-26 से बोला है, आई थिंक तब तक तो लेट होप सो हो जाए। बट लेट्स वेट फॉर कि थोड़ा सा और ज्यादा हमें एएफएफ की ओर से क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर काम होता हुआ दिखेगा, फिर हमें लगेगा कि नहीं भाई दिस विल बी पॉसिबिलिटीज। अभी तो मतलब सिर्फ एज ए एक इंटरेक्शन के दौरान सिर्फ ये बात ही हुई है। सो लेट्स सी। I don't know. What are we speculating here? Potentially possible VR? I think Satya said, and I liked it that he was very realistic in his approach. That we would like to implement VAR. It'll take us 18 to 20 months to implement. So we're looking at a 2-year window for it to be implemented. There is the cost implication, which a lot of people forget. Exactly. And also is what is the contribution of the clubs towards VR? Because around the world, it is not just the national federation or the top league which is taking care of the VAR cost, but the clubs are involved. So all of and I tweeted it this afternoon. We're forgetting. We have to have the personnel to use VR. Now we are working on the next gen set of referees who are officiating in the ISL, who are officiating in the I League. We need additional referees to be able to be sitting in front of the screens and deciding on VR decisions. That will take time. So if in 2026 it can be implemented, we're talking about 2025, sorry, you were saying, I feel that's very early. I think 26, 27 looks to me more realistic because that would give us about 30, 31 months to implement everything that is needed. And I think that might be a realistic time frame. Again, a VR for the sake of having a VR makes no sense. Whenever VR is installed, it has to be done right. And the training of the personnel is the most important thing, as it shows in week in, week out, be it the Premier League, be it the Bundesliga, be it La Liga, how much of problems you're having with VR across Europe, with decisions, despite of the technology, decisions being wrong, because as long as there's a human element, an element of judgment, the judgment of a situation can be wrong. Period. Just wanted to ask you guys while we're on VAR, just a little sort of fun question, I guess. Do you guys like VAR? Do you like while watching football, people who've played football? Do you think it sort of takes out uh, that spontaneous element in football out of the game because you're celebrating a goal one moment and the next you're sort of waiting, looking at the screen? Does it sort of kill the sort of buzz? डेफिनेटली वो एक होता है बीच में जब इंटरप्शन होता है, कभी कभी जब लंबा हो जाता है कि 2-3 मिनट का, तो एक आई थिंक प्लेयर्स की भी जो रिदम होती है वो सारी चीजें हो जाती है। लेकिन आई थिंक जो उनका मतलब बेसिक पर्पस जो वीआर का है कि आपको एरर को कम करना है, नो डाउट अभी वो सर्व नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो बेसिक पर्पस है वही है कि वे गेम से जितने भी ज्यादा इस तरह के जो डिसीजन है कि जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि रेफरी से गलती हो जाती है उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश है। सो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो
आई थिंक और भी ज्यादा इसमें धीरे धीरे आगे इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। और जैसे अभी कोई बोल रहा था कि भाई IFFB ने, जो इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पे वेंगर का जो ऑफसाइड रूल है वो भी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, सिन बिन रूल लाने की सोच रहे हैं। सो फुटबॉल मतलब हमने देखा है कि हर डिकेड में चेंज होता रहता है। सो आगे भी होगा एंड लेट होप सो कि बेटर डिसीजन मेकिंग और वो सारी चीजें हो। Yeah. I know before we close today, Yeah. the VAR thing. Do you like it? I think it is, again, if you see technology implementation in other sports, you see, for example, how its own version of VAR is used in hockey. If you see how video refereeing is used in, let's say, ice hockey, American football, handball, and other sports, basketball even, it's the time where such technology should be used. With AI and other things coming in, I don't know if you saw the new ball for the Euros 2024. Yeah. That ball is a Yes. high-tech ball. It's not a Yeah. bladder inside, and it's done. I It's think actually, it's from Adidas, na? it doesn't Yeah. matter from Yeah. who it is. All of them can make it. It doesn't matter if it's Adidas, Puma, Nike, whoever. But the point is that the technology is evolving and moving so fast that at the top level you have to install it in some sort of form or way. I find it a little dangerous that the secretary is talking about installing it in the I League besides the ISL. I would rather say install it in the ISL first, see it, make it work, and then put it into the I League. But again, that's my personal opinion. But that's, I think, AFF needs to go step by step. I think if you're being too ambitious, it will not work. And again, training your personnel, if you have a 12-team ISL, it means you have to have 6 VAR referees for a week. An assistant VAR referee. Do you have that manpower? And I think that is what I doubt at the moment. So therefore, let's take it step by step. Let's do it right. Let's not. I think the AFF should not make promises which it can't keep, because then the backlash is bigger. Just say we will take our time. Maybe even not give a timeline. Let's be honest, because this will take time to implement properly. It is still in Europe not perfect, but I think VR is something as a tool which makes football more just. Because I guess, I don't know, I don't have a statistical number to it, but I would say 8 or 9 decisions by VAR are right out of 10. And that way it makes football much more even honest, these offsides, these goals, penalties and other things. So therefore, yes, VAR is strengthens football, and but VAR needs to evolve further globally, and it needs to evolve to a certain level to be implemented in India. Fair enough. Fair enough. I think that's a lovely sort of touch on it, I know, because I think what VAR does is it makes, although they might get the odd decision wrong, you're getting most of them right, which is what we want to see in football, and that's probably the right way to go about it. Again, guys, Hiren and Arnava, thanks for joining in today's session, and then just 2 more days, guys, and then we're India versus Qatar. It's going to be a lot of fun. It's going to be crazy. We're going to have a blast on Tuesday. So join in Tuesday, join in Monday again. We're going to preview the game. It's going to be a lot of fun there as well. So yeah, I can't wait for the next one. And then we return to club football and back to normal. Uh, Everybody who's watching, please do like and share these videos that and lives that we do. Please subscribe to all the channels: Sports Khabri, Curious Harry, Arun Foot, and Indian Food and Football. And keep supporting us, guys. Good night, and we'll be back with more content. Good night, everyone. Guys.